Hello, students. Welcome to Notebook. Do you believe in the saying, honesty is the best policy? Let us find out the truth behind this statement through a story. Today's lesson is about a wicked moneylender, Kanhaiya Lal. Do you know who is a moneylender? A moneylender is a person who lends money to those who pay interest. Kanhaiya Lal was a rich and corrupt moneylender. However, he was a miser. कन्हैया लाल एक अत्यंत भ्रष्ट अमीर सूदखोर था। वह बहुत कंजूस था। Who is a miser? A miser is a person who does not want to spend money even on the basic necessities of life. बच्चों, कंजूस उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी धन व्यय नहीं करता है। Kanhaiya Lal used to cheat the poor and illiterate villagers by taking a huge amount of money as interest from them. वह गरीब लोगों से उच्च दर पर ब्याज वसूल कर खूब रुपए कमाता था। There were no banks in those days to provide loan to the villagers. The poor villagers had no other option but to borrow money from Kanhaiya Lal. उन दिनों ऋण के लिए बैंक नहीं हुआ करते थे। गांव के लोगों के पास कन्हैया लाल से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेने के अलावा कोई दूसरा उपाय न था। One day, while returning home after having done good business in the market, Kanhaiya Lal lost his bag of gold coins. To get back his bag of gold coins, he announced a reward of a gold coin to the person who will find and return his bag. एक दिन कन्हैया बाजार से अपना काम निपटाकर लौट रहा था। रास्ते में सोने के सिक्कों से भरा उसका एक थैला खो गया। अगले दिन उसने घोषणा की कि जो कोई भी खोया थैला वापस लाएगा उसे वह पुरस्कार के तौर पर एक सोने का सिक्का देगा। However, the wicked moneylender had a plan. He did not want to give the reward. So in his announcement, he did not mention the total number of gold coins that were there in the bag. There were 20 coins in that bag. परंतु घोषणा के वक्त उसने यह नहीं बताया था, क्योंकि इसके पीछे भी उसकी चालाकी थी कि इनाम का एक सिक्का वह बचा लेना चाहता था। उसके थैले में 20 सोने के सिक्के थे। A poor farmer named Bhola found the bag of gold coins. The next day, he visited Kanhaiya Lal's house to return the bag and receive his reward. On receiving the bag, Kanhaiya started counting the coins. To avoid giving the reward, Kanhaiya lied to the farmer. He told Bhola that there were 21 coins in that bag. Kanhaiya blamed Bhola for stealing the coin. दूसरे दिन भोला नाम का एक गरीब किसान कन्हैया के पास आया और कहा कि सोने से भरा एक थैला उसे मिला है और वह बदले में अपना इनाम मांगता है। कन्हैया ने थैला लेकर अपने सिक्के गिनने शुरू किए और कहा, थैले में तो सिर्फ 20 सिक्के हैं। उसने आगे कहा कि जब उसका थैला खोया था तब उसमें 21 सिक्के थे। मुझे लगता है जो एक सिक्का कम है वह तुमने अपने इनाम के तौर पर ले लिया है। Poor Bhola was angry at this false charge, so he went to the village headman or the mukhia to complain. The mukhia immediately called Kanhaiya and inquired about the exact number of coins in his lost bag. Kanhaiya confirmed that there were 21 coins in that bag at the time he lost it. However, the bag found by Bhola had 20 coins. भोला दुखी होकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। मुखिया ने कन्हैया को बुलाया और कहा, जब तुम्हारा बैग खोया था तब इसमें कितने सिक्के थे? कन्हैया ने जवाब में कहा, 21 सोने के सिक्के। और यह पूछने पर कि उसे कितने सिक्के मिले, उसने जवाब दिया 20। तब मुखिया ने निर्णय सुनाते हुए कहा, मुझे लगता है कि भोला को किसी और का खोया हुआ थैला मिला है, क्योंकि तुम्हारे थैले में ज्यादा सिक्के थे, इसलिए कोई भी इस पर दावा नहीं कर सकता। इसलिए यह थैला भोला को दिया जाता है। The village mukhia understood that Kanhaiya was not an honest man. He was cheating Bhola. So, the mukhia concluded that Bhola had found some other lost bag as it contained less money in it. So, he suggested that Bhola should keep the bag as no one else had claimed it. Do you think the mukhia taught Kanhaiya a lesson? Certainly, the mukhia wanted to punish Kanhaiya for his dishonesty. One should be loyal and remain honest in his or her life
it is important that you should not cheat others for your own benefits. That is all for today, students. See you soon in the recap and the Q&A videos. Until then, goodbye.